Hello everyone, welcome to my channel. I am Dr. Govind Anglong. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस. बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशंस, आई हैव वन एडवाइस. And my advice is to solve any mathematics problems. The first thing is आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है. So first read the given introductions and try to understand the context because introduction में ही concept छुपा हुआ है. मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इंट्रोडक्शन को इतना इंपॉर्टेंस देता है नहीं, डायरेक्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है. ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है. नाउ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस. A comma A belongs to R. इसका क्या मतलब है? I will explain. Suppose set A has an element 1, 2, 3. Then reflexive relation will be 1 relate 1 is 1 comma 1, 2 relate 2 is 2 comma 2, 3 relate 3 is 3 comma 3. It means सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेट होना है, जैसे कि 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3. दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव. सपोज R equal to this. Is it this reflexive? Yes, it is reflexive because हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट हुआ है, जैसे कि 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 रिलेट हुआ है, और जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, now let's take another example. Suppose R equal to this. Is it this reflexive? No, this is not a reflexive. 1 into अपने आप से रिलेट हुआ है, लेकिन जो एलिमेंट्री है वो अपने आप से रिलेट नहीं हुआ, so this is not a reflexive. Okay. Now next is symmetric relations. If A comma A belongs to R, then B comma A belongs to R. इसका क्या मतलब है? I will explain. Suppose set A has an element 1, 2, 3. Then symmetric relations will be 1 relate 2 is 1 comma 2, 2 relate 1 is 2 comma 1, 2 relate 3 is 2 comma 3, 3 relate 2 is 3 comma 2, 3 relate 1 is 3 comma 1, 1 relate 3 is 1 comma 3. It means हर एलिमेंट का इनवर्स रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है. Now I will explain in another way. Suppose this is the element 1, 2, 3. Then symmetric relations will be, जो 1, 2 का इनवर्स रिलेशन क्या होगा? 2, 1. Okay. Again 2, 3 का इनवर्स रिलेशन क्या होगा? 3, 2. Okay. Then the same way 3, 1 का इनवर्स रिलेशन क्या होगा? 1, 3. So this type of relation is called symmetric relations. Now the question is how to identify the symmetric relations. Suppose R equal to this. Is it this symmetric? Yes, it is symmetric because हर एलिमेंट का इनवर्स रिलेशन है, जैसे कि 1, 2 का इनवर्स है 2, 1, 2, 3 का इनवर्स रिलेशन है 3, 2. So it is symmetric. Now let us take another example. Is it symmetric? No, this is not symmetric because the inverse relations of 2, 3 is not present here. So this is not a symmetric. And the next is transitive relations. If A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C belong to R. इसका क्या मतलब है? I will explain. Suppose set A has an element 1, 2, 3. Then transitive relation will be 1 relate 2 is 2, 1, 2, and 2 relate 3 is 2, 3, and 3 relate 1 is 3, 1. Now I will explain in another way. If L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3, then obviously L1 and L3 are parallel to each other. You got my point? Okay. Now the next is equivalence relations, the most important one. It is if R is reflexive, symmetric, and transitive. Then suppose set A has an element 1, 2, 3. Then the equivalence relations will be 1 relate 1 is 1, 1, 2 relate 2 is 2, 2, 3 relate 3 is 3, 3, and 1 relate 2 is 1, 2, 2 relate 1 is 2, 1, 2 relate 3 is 2, 3, 3 relate 1 is 3, 1. This is reflexive. Now this is symmetric and this is transitive. So ये तीन कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है.
Okay, in the next video we will solve the example problems. Now please share this video to class 12 student.